Perfect. So let's get started with the session. What do we have? Why shall we select you over a candidate who's got a work ex? Now, this is question which is predominantly can be asked for freshers. Very true, right? Now, this question can be amended or kind of twisted a little bit, which is saying that why shall we select you over and above somebody who's got a 3 years of work ex, somebody who's got 4 years of work ex, somebody's got around about 2 years or 1 year of work ex, right? Or maybe you're a fresher that will ask you, why shall we select you before without selecting anybody who's got a work ex. Very simple. As a fresher, what couple of things that I bring it to the table is basically, as a fresher, I bring to the table a fresh perspective towards looking at the things. That is number one. As a fresher, definitely. For the fact that I've studied, during my UG, couple of concepts and everything, I think I've got a little good hold on the academics. That is number two. For the fact I'm a fresher, I haven't seen the outside world, or at the same time I haven't seen processes, I haven't seen things, how do they work in the corporate. So I do not have a pre-notion, preconception or perception or perspective about anything which exists there in the corporate world or in the market. So I'm somebody who can bring in new perspective, new perception, or out of the box thinking as far as my or compared to my work ex folks, right? And then you can say that I'm being a fresher, it also gives me an opportunity to unlearn and learn something, right? So that's where I come into picture, which is like technical things, I'm sort of better than the work ex guys, because यहाँ पे counter question आएगा तो फिर work ex वालों की problem क्या है? Now you all will agree to this. जहाँ तक work ex वालों की problem है, problem ये होती है कि as a work ex people, we have seen the things working in the market, we have seen the things working in the corporate, and we already have a pre-notion about it, that your boss is going to be an ass, right? HRs are good for nothing, right? Increment, forget about it. Whatever, how many hours you work, it's not going to get counted. Working on weekends, not happening. I'll die, but I'll never work on weekends, because the extra thing that you put in as far as your efforts are concerned, कभी उसका फायदा नहीं होता. And they'll always show you a carrot कि भाई आपको on site भेजेंगे या फिर आपको team lead बना देंगे, right? तो ये चीज़ आपको बोलना नहीं बेटा इंटरव्यू में, पीट जाओगे इंटरव्यू में ये बोलोगे तो. ये बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, राइट? FYI, ये चीज़ें बोलनी नहीं आपके इंटरव्यू में. Fine. So as a working professional, right? And what happens? I'll tell you something. Somebody who works for 5 or 6 months. Now these are infant. I call them as an infant. 5-6 महीने में घंटा तुमको कुछ नहीं पता चलता कि actual company में क्या हो रहा है. But somebody who's worked for like 5 or 6 months has a feel that I've been working for the last 5 years. There is no comparison. So I am a working guy. You are like 4 years old in the company, and we are same. So that kind of an ego, that kind of an attitude gets built up, right? So that is something happens with the work ex people, and work ex people are sometimes very tough to mold. As a company, you cannot really mold them because they have a perception, they have a perspective. They're like, sometimes their smartness causes problem, right? ये चीज भी आपको जानना बहुत जरूरी है. यहाँ पे फ्रेशर्स बाजी मार लेते हैं, फ्रेशर्स को मोल्ड करा जाता है, नॉट इन ए नेगेटिव वे, बट फ्रेशर्स को मोल्ड करा जाता है. फ्रेशर्स को एक्चुअली चीजों में अडेप्ट करा जा सकता है. सो द अडेप्टेबिलिटी पॉइंट दैट वी टॉक अबाउट इज एक्चुअली अ रियलिस्टिक पॉइंट फॉर द फ्रेशर folks out there. But with work ex, it doesn't really happen, guys, to be very honest. If you agree being a work ex, guys, kindly give me a thumbs up or just say yes, right? If you disagree, you're a good person. You're a good person. It means you're not in this boat actually, right? True AF. Thank you so much, Nabe, for that. Thank you so much for the confirmation. Right? तो ये चीजें एक्चुअली होती है, and freshers are always open. And you know what? ये टेक्निकल चीजों के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी तक पर्सनल लेवल पे नहीं गया. तो दोनों, आप जब भी किसी चीज का आंसर दोगे ना गाइस, बड़ी स्मूथ चीज मैं आपको बता रहा हूं. आप एक तो टेक्निकल में डालो और पर्सनल में डालो, आपके पास दोनों पॉइंट बाय डिफॉल्ट रेडी है. तो टेक्निकल में हमने ये सब चीजें करी. दूसरी बात ये आप बोल सकते हो दैट बीइंग अ फ्रेशर, आई एम गुड एट एक्सेल, आई एम गुड एट पीपीटी, राइट? ऑल दिस थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट, राइट? तो ये तुम्हारे एडेड एडवांटेज है गाइस. I mean it. More than understanding strategic management and how does the startup funding works and how do you value a startup, leave everything aside. First, know how to make a good PPT. Know how to put in an Excel spreadsheet at work, right? Finance folks, Excel is your bread and butter. Consulting folks, PPT is your bread and butter. Trust me, lot of leads, rather lot of deals, I would say. 90% of the deals
in investment banking and consulting domain are cracked by just looking at the PPT. So PPT has its own value. Yeah, PPT has its own value. So ये वाली चीजें जो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये हो गया आपका टेक्निकल वाला. अब थोड़ी पर्सनल बारे में बात करें, थोड़ा एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं. एज अ फ्रेशर आई एम मोर enthusiastic, right? I am more committed. I am ready to go that extra mile. I've got more energy. I've got more josh, something like that. और ये होता है because you are there to kind of make your mark in the world. But sometimes it happens with WorkX students. Sometimes it happens with WorkX people. For the fact those all bad pre-notions and all that politics and all that, right? We always believe that even after working hard, I'm not going to get anything. So I don't find lot. Again, I might be wrong, but मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जो subjective हो सकती है. कि WorkX folks probably be looking at growth immediately rather than enjoying the work, rather than learning the things. They are now more into work. They're more into work, but more towards the growth. यार काम तो करेंगे, no doubt about it. 10, 12, 15 घंटा हम काम करेंगे, no doubt about it. But हमें growth चाहिए. So freshers का ऐसा फंडा नहीं होता. Freshers क्या बोलते हैं कि कोई लोड नहीं है. 2-3 साल हम आराम से देंगे. And we're gonna work like donkeys. Not a problem. 7 days a week, 365 days. And you know what? When a WorkX guy joins a company, and if he's not joining his own, his favorite company as such, they'll get bored very quickly. 5-6 महीने में बोर हो जाएंगे. बट फ्रेशर कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लेना, एक साल उसका ना इंस्टाग्राम देखना, लोडेड, hashtag corporate world, hashtag C-suit, hashtag aspiration, hashtag beating the shit. These guys are crazy. Like they're in a different zone altogether. The next, and on LinkedIn they go crazy. राइट बट द नेक्स्ट ईयर यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी ठंडा हो गया भाई, थोड़ा 1 साल का वर्क मिल गया. वो जब उसका अप्रेजल होता है ना, जब उसकी बॉस लेता है ना मस्त एकदम कि भाई तूने तो काम ही नहीं किया, तो फ्रेशर बोलता है मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया ही नहीं सर आपने, प्रोएक्टिव नहीं था तो यू वर नॉट प्रोएक्टिव, यू डिड नॉट आस्क फॉर द वर्क. सर आई डिड आस्क फॉर द वर्क, nobody gave me the work. Again, that's your problem because you were not proactive. Then the freshers will understand कि भाई साहब ये चीजें हैं. वहां पे वर्किस वाले बाजी मार लेते हैं, ठीक है. तो एज अ फ्रेशर I am definitely somebody who's going to bring in a lot of value and lot of energy and enthusiasm, positive attitude. Freshers are अलग level positive. अलग level positive. जब मैं आपसे बात करता हूँ ना, मेरे को ऐसी चीजें आती दिमाग में. Freshers are अलग level positive. अलग, like can you do this? I can. मतलब तेरे को नहीं आता फिर भी मैं करेगा. They're very hard working by the way. They're very sweet. They're very very hard and they're extraordinary positive. Literally कभी freshers से बात करना, हम तो बहुत मजे लेते थे जब हम MBA करते थे. हम फ्रेशर्स को लेके जाते थे कि डूड ये करेगा, हाँ सर क्या भैया करेगा ना, भैया करते थे. हाँ भैया करेंगे ना, बिंदास भैया कर लेंगे, आप टेंशन नहीं है. कुछ तो जूनियर इतने प्यारे थे, सर कहते थे हाँ सर कर लेंगे बिकॉज दे नो ना कि प्रोफाइल है करके 2-3 साल का. तो फ्रेशर्स के अलग मजे होते हैं. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू, एनीवे जोक्स अपार्ट, दिस इज व्हाट यू नीड टू पुट इट ऑन द टेबल कि सर मेरा ये पर्सनल लेवल है, ये मेरा टेक्निकल लेवल है. मैं टेक्निकल लेवल में भी एक बेनिफिट दे सकता हूँ, मैं पर्सनल लेवल पे भी एक बेनिफिट दे सकता हूँ. वर्किंग्स वालों के साथ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स फॉर देम इज बुलशिट. दे कांट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बिकॉज दे नो इट्स नॉट गोना वर्क. सो दे आर मोर इनटू इनसाइड द बॉक्स. फ्रेशर्स आर मोर इनटू द आउटसाइड द बॉक्स, राइट. ये थोड़ा सा आपको जानना बहुत जरूरी है. ऑन द अदर हैंड, when you talk about companies, when you talk about verticals like consult, brand management, sort of investment banking, right? Not on the trading front, but on the mergers and acquisition sort of front or maybe back end, freshers की hiring बहुत ज़्यादा होती है because उनका जो enthusiasm होता है, जो uncounted hours वो जो अपने को खुद को जो stretch करते हैं is mind boggling. तो वहाँ पे freshers को जानबूझ के लिया जाता है, राइट. ये चीज समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है. वर्किंग्स वालों को लिया जाता है कंसल्ट में, ऐसा नहीं कि नहीं लिया जाता. बट अगर आप आईटी वाले हो, आपको डायरेक्टली आईटी कंसल्ट में डाला जाता है. अगर आप बी स्कूल पे जाओगे, 90% फंडा यही होता है. 10% वो एक्सेप्शंस होते हैं जो अंदर जाके फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में फाड़ दिया उन लोगों ने. भाई उनका जीपीए 3.8, 3.9, 3.7 आया, उनको शायद से वो स्विच मिलता है कि चलो यू नो व्हाट, यू वर इन द आईटी डोमेन, विल स्टिल पुट यू इनटू द एफएमसीजी कंसल्ट वाला डोमेन. तो वहां पे ये चीजें होती है. जब मैं बात करता हूँ आईबी के बारे में, आईबी में फ्रेशर्स लिए जाते हैं, पर जहां पे आप बात करते हो प्रेशर बिल्डिंग प्रोफाइल जहां पे होती है ट्रेडिंग एंड ऑल दैट, आईपीओ वगैरह, मार्केट्स वगैरह के बारे में जब हम बात करते हैं, सो मार्केट सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल्स आर बेसिकली गिवन टू वर्किंग फोक्स प्लस फ्रेशर्स विद अ वेरी गुड एकेडमिक्स, राइट. तो ये एक चीज होती है. तो आपको इस तरीके से बताना है कि सर एज अ फ्रेशर आई एम एन एसेट.